section. So we are going to start new section, which is the querying the data, how to pull the data from the table. Okay. So in this class, we have just one table, but generally in the real case, there are multiple tables. Okay. So right now we are going to learn only single table. Okay. Advanced level, we will learn how to pull data from multiple different tables, 2, 3, 4, 5. Data can be spread across multiple tables. एक table में नहीं होता है. Okay. But to start with the level 0, ground level, let's start with the first table, single table. Let's suppose data एक single table में है, and from there I want to pull the data. Okay, that's what we are going to learn. After that, we will extend our concept. Okay. So how to pull the data? Data pull करने के लिए we have a statement select. Okay. So already we have used the statement, like for example, select a star from table. Okay. If you do star, okay, then what will happen? It will pull all the column. ठीक है. मान लो कि जितने columns है तो सारा column pull करेगा. अगर आप चाहते हो कि you want some specific column, you don't want to pull all the record, all the column. You want some specific column. Okay. So here you have to mention the column name. So select column 1, whatever column you want to pull. That depends. Okay. So जितना भी column pull करना, just put the column name using comma separated. So select column 1, column 2, column 3 like this. Okay. And select statement, column. Okay. Then from. Okay. So from which table you want to pull. Okay. So this is the basic command to pull the data. Which आपको कौन सा column pull करना, you can mention the column. If you don't want to mention column, you want to pull all the column, then just put star. Star का मतलब हो कि all. I want to pull all the data, all the column. Okay, so this is the select statement. Any questions, any doubt in this statement, in this command? No, sir. Okay. So while here I'm giving some code example, some syntax example. Okay. So for example, here the following example use the select statement to get the first name, last name, salary, and new salary. Okay, you can see here. So let's suppose there's an employee table. From employee table, I'm just here. There can be chance that this employee table has 20 column, 30 column. It has multiple columns. Okay, but here you can see here I'm using a particular column name. I don't want to pull all the columns, so I'm interested only for first name, last name, salary. Okay, you can see here. Okay, and here one more thing I'm doing here. This is called expression. Okay. So to assign an expression or column and alias, you specify the as keyword followed by the column. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि I'm pulling the salary. ठीक है. From the table, I'm pulling the salary. Okay. And you can see here there are two salary. First salary is a simple salary. ठीक है. यहाँ पर मैं salary को pull कर रहा हूँ. ठीक है. And in the next column, I'm pulling the salary, but I'm doing some calculation. ठीक है. तो सैलरी में मान लो कि उसका 20% करना, जो भी डेटा आएगा सैलरी का उसका 20% फाइंड करना है, 30%. You want to do some mathematical calculation on the data. So while pulling the data, you can do the calculation. ठीक है. डेटा को पुल करते समय ही आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो कॉलम के ऊपर. तो यहाँ पर आई एम अप्लाइंग स्टार. सो स्टार इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. यू आर मल्टीप्लाइंग सैलरी बाय 105. ओके. सो दिस बिकम्स अ न्यू कॉलम. तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा सैलरी का उसके ऊपर यू आर अप्लाइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन सो दैट यू कैन प्रीटी मच डू. ओके. और इसको दिस डेटा, दिस जो कॉलम बना, दिस डेटा को यू कैन गिव सम नेम. फॉर एग्जांपल हियर इन दिस सेकंड क्वेरी आई एम पुलिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड सैलरी स्टार समथिंग, एंड दिस कॉलम, दिस जो डेटा बना इसको मैं एक नया नाम दे दिया, न्यू सैलरी. This is the hike in the salary. This is the current salary. And after the hike, what will be the new salary? So here on the salary column, I applied some calculation. Okay, I got a new salary, and usko I'm giving some new name. So using the as, so as is called alias. Okay. So आप calculation कर लो. You apply some calculation on the column, and you can give some new name as करके. Okay. So this is a select statement. So now let's practice this. Okay. So can you share your screen? So let's practice this select column. So Rasagar, can you please share your screen? Okay. So you can see here right now we're using select a star, right? So can you run select a star one more time?
So you can see here it is pulling all the column, ID, first name, last name, जितने column है सबका data आपको मिल रहा है, right? You're getting all the data. Okay. Now write new statement. Let's suppose कि from this table I want to pull only ID, first name, last name, salary. बस इतना मुझे चाहिए. ठीक है. Only first 4 record चाहिए. Then we have to write select. Write select space and give the column name. What column you want? For example, ID. So just type ID. Colon, sorry, comma, then first name, comma, salary, last name, comma, salary. ठीक है. So I'm interested only for this 4 column. मुझे पूरा नहीं चाहिए. ठीक है. From, उसके बाद from होगा नहीं. From नहीं, अभी नहीं हुआ. This is not complete. So select this column from which table. तो यहाँ type ये from table name. HR_HDB. Okay. So this is the command to pull the specific column. अगर आप start कर दोगे, it will pull all the column. अगर आपको particular column चाहिए, then you have to put all the column name. Now run this. You can see here it is pulling only the 4 ID, first name, last name, salary. बस आपको इतना data मिलेगा. Clear है? Yes, sir. Okay. Now, I want to give some, let's suppose I want to multiply salary by, let's suppose 10%. The 10% hike देना है, ठीक है? So yeah, just rewrite the same thing below. Okay. So this is the old salary. Okay. And put new salary. So salary, ठीक है? Salary को multiply कर दो something 1 dot something like that. Okay. And give some name. Okay. Just run this. Just run without, don't give as now. Just run this. Let us see what happens. You can see here. So the column is ID, first name, last name, salary. ठीक है. और जो salary का जो multiply किया था, the column name is same. Salary *1.10, right? You can see that this is the column name. Yeah. ठीक है. So it is not looking good, right? So I can give some logical name. तो इसलिए वहां पे alias करते हैं. So now put edge and say new salary or new high, something, new salary, something like that. You can give anything. Something wrong there. Can you run this? No. New salaries, don't give a space. दो salary हो गया ना, 3 बार. New एक keyword है, ठीक है. High कर दो, salary high कर दो. Give a salary hike. Hike in salary, a salary hike, something like that. Yes. Okay. So that's a column name. So आप यहाँ जो भी नाम देखो, you can give some custom name. ठीक है. So salary column पर I applied some mathematical calculation and I gave some new name for the salary. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डेटा को पुल भी कर रहे हो, you are pulling the data and at the same time you are applying some logic, you are applying some calculation. Clear है? This much? Any doubt? सर इसमें जैसे उसमें शो कर रहा था 1.10 करके, अब इसमें सैलरी हाइक लिख के बस आ रहा है. क्यों ऐसा सर? हमने रीनेम कर दिया ना, सैलरी इनटू 1.10, वी हैव रीनेम्ड इट एज सैलरी हाइक. अगर रीनेम नहीं करोगे तो इट विल शो द सेम सैलरी स्टार. Can you remove that? As let's suppose if I don't give any name, it will appear like salary *1 dot something like that जो है वहां पर. You can see this is the column name. Yes, yes. मैं इसको I want some logical, some useful name. Okay, it is not giving some logical name, right? तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, उसको एज करके. इवन आईडी को आप चेंज कर सकते हो. जैसे आईडी है, जो पहला आईडी है उसको भी एज एलियस लगा सकते हो. जस्ट पुट एलियस एंड से you give some logical, for example identification या something, employee ID, something, you can give any name. So each column को आप rename कर सकते हो. While selecting you can rename it. It will appear like employee ID. Okay, so it is called alias. आप उसको while selecting you can rename it. Any confusion, any doubt? No, sir. So this is very simple, straightforward select statement. ठीक है. Select a star. If you do a star, it will pull all the column.
If you don't want to pull all the column, I want some specific column, then you have to put the name. Select column name with comma separated from table name. This is the pretty much okay. Any doubt? तो ये जो सैलरी इंटू 1.10 किया है ये खुद ही कैलकुलेट करके Yes. वैल्यू देगा? Yes, yes. वो डेटाबेस कैलकुलेट करेगा. You don't have to do any calculation. ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके भी देगा? हाँ, डिवाइड कर देगा. यस, प्लस करोगे प्लस कर देगा. प्लस कर देगा. ठीक है. Okay. Okay. I hope it is clear. Now you can stop your sharing. So this much we practice select statement. Okay. Next time. I hope you're getting right. This is okay. So this much we learn select. Okay. Okay. X distinct. Okay. ऐसा हो सकता है कि there's a chance that some columns are repeating. For example, a state. Okay. Let's suppose there are multiple employees who belong to same state. UP, UP, UP. I think we have that record in the table, right? So यहाँ पर I don't want to get repeated record. I want to get the distinct, the unique record चाहिए. ठीक है? So you can use distinct keyword. Select distinct column from table. Okay. So in a table, a column often contains many duplicate values. Say, for example, in our case, state, it has multiple duplicate values, UP, UP. And sometimes you only want to list the different values. Okay. So we use distinct. Okay. Let's practice this. So can you share your screen? Okay. So can you run select a star? Select a star wala command. You can see here state. ठीक है, इसमें UP है. There are 2 times UP. It's repeating, right? Okay. Now go to select command. नीचे आओ, scroll down, and here select state as well. Select ID, first name, salary, and state. State भी pull करते हैं. हाँ. Now run this. You can see here it is giving UP multiple times. Okay. एक काम करते हैं, यहाँ पर state के पहले just put distinct. Just before state, just put distinct. Distinct. TINCT. नहीं, अभी भी स्पेलिंग गलत है. DISTINCT. DISTINCT. Okay. डिस्टिंक्शन से डिस्टिंक्ट है ना सर? It can't be. Just remove the all. Just remove the ID, first name, last name, salary. Only just keep state. Yeah. Now run this. Okay. Now remove the distinct keyword and just run select state. So you can see here it is state coming 4 times. UP, TN, UP, MH, right? So here UP is repeating, right? 2 times हो रहा ना? कहाँ? UP 2 times आ रहा, right? So because UP duplicates है, so I want only distinct. तो मुझे I want only list of state which are distinct. ठीक है? I don't want to repeat duplicates. तो उसके लिए distinct करना पड़ेगा. तो state के पहले now put distinct, so you will get only UP, TN, MH. UP 2 times नहीं आएगा. No, just put distinct. State के पहले. हाँ. Now select distinct. I want distinct state. I want unique state. तो UP अब एक ही बार आएगा. ठीक है. लगे can you put ID now? Select के पहले distinct के पहले put ID comma distinct state. ये काम नहीं करेगा. हाँ. Can you run this? No. What is problem here? See, ID you are distinct. You will use distincts which are unique. Okay. So ID are not ID duplicate नहीं हो रहा, right? ID is just single. Okay. So a combination will not work. Okay. So you have to use distinct which are really repeating. Can you run select a star? उसमें और भी कुछ distinct duplicates है क्या?
Anything is duplicating, which project department is there. Department, okay. So can you type department there? And the state as well. नहीं दोनों चाहिए, comma and comma state. Okay, can you run this? देखो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सब एक ही, देयर नो डुप्लीकेशन, राइट? यू कैन सी प्रोजेक्ट यहाँ 2 टाइम था, बट प्रोजेक्ट कमिंग 1 टाइम. ओके, सो डिस्टिंक्ट वहां यूज करना जो रिपीट कर रहा है, विच हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज. So if you don't want to get duplicate values, then you can use distinct. If you remove the distinct, just remove the distinct keyword. So it will show the repeated values. Yeah. So state and department state repeat kar raha hai. So you will show the duplicate value. Project 2 times, UP 2 times. I can see that. So you're getting the duplicate values. So if you don't want to get duplicate value, you want unique values, then use the distinct keyword. So you will get only the distinct. You got the idea? Any doubt in distinct? No sir. उसको आईडी से कुछ लेना देना नहीं है सर. नहीं, आईडी यहाँ पर अगर आईडी पुट करोगे तो काम नहीं करेगा, बिकॉज आईडी आर यूनिक. आईडी कॉलम आर यूनिक, दे आर नॉट डुप्लीकेशन इन द आईडी कॉलम. आईडी जो है हमारी वो प्राइमरी भी है ना. हाँ, प्राइमरी की है तो वो यूनिक है, राइट? उसमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, राइट? तो आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो. जब भी डिस्टिंक्ट यूज करना है तो यू कैन यूज ओनली दोज कॉलम विच हैविंग द रिपीटेड वैल्यू. जो डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा है उसी को आप डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो. अगर यहाँ पर आईडी, जस्ट टाइप वन थिंग, सेलेक्ट के बाद आईडी टाइप कीजिए. सेलेक्ट नहीं, आफ्टर सेलेक्ट टाइप आईडी. नहीं, वो डिस्टिंक्ट रहने दो, जस्ट कीप डिस्टिंक्ट आईडी. हाँ, सेलेक्ट नहीं, वो जस्ट कीप इट, सब रहने दो. सेलेक्ट के बाद आफ्टर सेलेक्ट टाइप आईडी. आफ्टर सेलेक्ट आईडी कॉमा. हाँ, दिस विल नॉट वर्क. व्हाई? Because department state are duplicate values, but ID is not duplicate, right? Yes. तो ये combination काम नहीं करेगा. तो distinct तभी use कर सकते हो जब all columns are duplicates. That's what I'm trying to explain. You can see it's giving error, right? It's giving red. अगर red है मतलब कि something wrong. Your syntax is not correct. ठीक है? Because ID is my unique and department is duplicate. तो this syntax is not valid. तो डिस्टिंक्ट तभी काम करेगा when all the columns are having duplicate values. Clear? Yes sir. ठीक है? Any confusion? No sir. Okay. So this is the idea of distinct. Now I can stop you sharing. Okay. Now next thing I'm going to talk about, which is very important. Okay, so abhi tak right now you understand what is select, how to pull the column. Okay, either specific column or all the column star karke. Okay, from, and you can do some calculation. You can put alias. You can give different name. Okay, and you can pull the unique columns. Okay, now as of now we are not putting any condition. Agar main bol raha hu, if I'm writing select a star from this table. Okay, so you will get all the record. Or if I saying select ID first name from this table, so you will get all the record, all the ID, all the first name, right? That's what happening right now. Lekin I want to pull the record based on some condition. Okay, just for example, I want to pull only those record, those employee who come from UP state. ऐसे करना है. अभी अगर if you write select ID first name last name from this table, it will get all the people from different state. ठीक है? लेकिन वो I don't want that. I want only those people who are from UP or who from Maharashtra. So here the selection, the data fetching depending upon some condition. वो condition satisfied होगा तब you will get the record, something like that. Okay. So if you want to pull some condition, this is the statement. Select what column you want, same thing. You can put a star as well or specific column from table name, okay, and where. Okay, so where is the condition? At what
आपको कौन सा रो चाहिए, विच रो यू वांट और एट व्हाट कंडीशन यू वांट. ओके, सो हियर वी हैव टू क्रिएट सम कंडीशन. ठीक है, क्लियर है. सो सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम दिस टेबल एंड फॉर व्हाट कंडीशन. ओके, तो इनको बोलते हैं क्लाउज. सेलेक्ट क्लाउज फ्रॉम कंडीशन में क्लाउज जैसे एंड ये वेयर भी आएगा क्लाउज. जैसे सॉरी. कंडीशन में, जैसे कि सिर्फ हम महाराष्ट्र का डेटा चाहते हैं हाँ तो हम कंडीशन वहां पे लगा रहे हैं ना सर, तो हाँ, महाराष्ट्र यस, का ही दिखाएगा। ओनली महाराष्ट्र दिखाएगा. मुझे ओनली वो रिकॉर्ड चाहिए जो जिसका एज 18 से ज्यादा है. आई वांट ओनली मेल, आई वांट ओनली फीमेल, आई वांट ओनली people who working in IT department. I want only those people working in sales department. Okay, I want only those people who working in IT and belongs to UP. ओके ओके। So we can build multiple condition. यस सर। ठीक है, तो वहां पर कंडीशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक देन है, व्हाट, देन सर वो चेक और वेयर कंडीशन में क्या डिफरेंस हो? चेक भी तो लगा सकते हैं उसमें। नहीं, चेक होता है while inserting the record. चेक लगाते हैं जब आप टेबल क्रिएट करते हो वहां पर लगाते हैं. ठीक है, चेक इज फॉर ओनली फॉर टेबल क्रिएशन. ओके। जब आप टेबल क्रिएट करो तो वहां कंडीशन करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी डेटा उसके अंदर जाएगा. यू इंसर्टिंग द रिकॉर्ड. यहाँ पर आप डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हो, डेटा को पुल कर रहे हो. दिस इज द पुलिंग पार्ट. डेटा को फेच कर रहे हो यहाँ पर. तो दोनों में डिफरेंट है. ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक यहाँ पर डेटा में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, डेटा ऑलरेडी है टेबल में. आई वांट जस्ट पुलिंग द डेटा. सो मुझे कौन सा डेटा दिखाना है यूजर को वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन पर. So this condition is governing that is the yeah, creating the rule कि अगर ये condition है then I want to pull the record. Okay, so this condition is very very important. पूरा गेम इसी का है. ठीक है, ये select from बहुत simple है. I want this column I from this table, but क्या condition क्या है, so you have to master this condition part. ठीक है, तो so कैसे build करते हैं, that's what I'm going to learn right now. You got the context? यस। ओके, सो देयर मल्टीपल ऑपरेटर्स. वेयर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन बिल्ड करना है तो उसके लिए यू हैव टू लर्न ऑपरेटर्स. ठीक है, सो दीज आर द ऑपरेटर्स विच वर्क इन द वेयर क्लाउज. ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाउज. ठीक है, सो इसमें 3 पार्ट होता है. सेलेक्ट क्लाउज, आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, व्हाट कॉलम यू वांट. फ्रॉम क्लाउज, कहाँ से, टेबल से, तो दिस इज वेरी सिंपल, टेबल का नाम देना है. एंड द वेयर क्लाउज. ठीक है, अब वेयर में आप कैसे कंडीशन बिल्ड करोगे, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो वी हैव टू लर्न दिस ऑपरेटर्स. ओके, तो इन सारे का कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको यूज करना होगा इन द वेयर क्लाउज. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू मास्टर. सो क्या क्या ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर, नॉट नल, नॉट ऑपरेटर. सो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं. ओके, and you have to learn these operators one by one. Okay, clear? So now let us understand, let's start with the comparison operator. What is comparison? Okay, if you know some language you can relate with that. Okay, comparison का मतलब होता है you're comparing two data. For example, equal, not equal, greater than or equal, less than. I think आपने Python से पढ़ा होगा, right? You might have studied in not every language. This is the concept of every language. For example, I want to pull the data who belongs to state UP. तो यहाँ पे equal state equal UP करना पड़ेगा. ठीक है, I want the data whose age is more than 18. तो age is more than 18 लिखना पड़ेगा. I want to pull the data whose age is more than or equal to 18. I want to pull the data whose age is less than 18. ठीक है, तो ये सब ऑपरेटर्स हैं. I think you know that. Equal operator, not equal operator, more than, greater than, equal, less than equal. ठीक है, so this is the comparison operator. Yes. For example here, यहाँ example दे रहा हूँ equal operator का. ठीक है, here I want to select the employee ID, first name, last name. Okay, where उसका जिसका last name हिमरू है, जो भी word है. ठीक है, मुझे only those data चाहिए from employee table, उनका जिसका last name ये match कर रहा है. जिसका last name exactly हिमरू जो भी है, मान लो कुमार है, जिसका last name कुमार है, I want only those data. ठीक है, तो here I am building the condition where last name is equal to Kumar or last name is equal to XYZ, last name is equal to ABC, whatever. ठीक है, so this is the example of equal operator. यहाँ पे equal, यहाँ पर where में क्या होगा, you have to put the column name. ठीक है, जो condition build हो रहा है on the column, कि किस आपको कौन सा column पर condition चाहिए. ठीक है, तो where में पहला आपका column आएगा. ठीक है, column के बाद what is the operators, क्या आप condition है कि I want last name जिसका कुमार है. ठीक है, this is one example. Not equal.
I want let's suppose department ID है, so we will practice. Don't worry, just let us take a look. We will do practice on this. So I want those record इनका department ID is not equal to 8. मतलब या तो 8 से ज्यादा है या 8 से कम है. It can be more than 8, it can be less than 8. Okay, ये symbol का मतलब होता है not equal, right? This symbol not equal. ठीक है, this is not equal. So here I am pulling those record whose department ID is not equal to 8. मतलब कि more than 8 or below 8, right? Greater than. So I want to pull those record whose salary is more than 10,000. Okay, salary more than, this is the greater than, and this is the data. Okay, so here I'm interested for those employees. I want those record whose salary is more than 10,000. Clear? Less than, this salary is less than 10,000. Okay, greater than equal, this salary is greater than or equal to 9,000. So ये हम बात पूरा game symbol का, you have to just mark this is symbol. Okay, so this is the comparison operator. Clear है? Equal, not equal, less than, this one. So now let us practice. Okay. सर So, एक चीज पूछना था, yes. इसमें हमने जो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद एम्प्लॉय आईडी, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम लिखा है ना फर्स्ट वाले में, तो हम उसको सेलेक्ट में डायरेक्ट लास्ट नेम नहीं लिख सकते हाँ, कॉलम लिख में? सकते हो. देखो कॉलम का ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप आईडी पहले आप फर्स्ट नेम ले सकते हो, आईडी को बीच में कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. नहीं, ओनली हमको सिर्फ लास्ट नेम ही हाँ, तो ओनली इक्वल लास्ट टू. नेम रखो. सेलेक्ट लास्ट नेम, दैट्स ऑल. अच्छा, वो बाकी के दोनों नहीं लिखना जरूरी ना? हाँ, एम्प्लॉय आईडी आपको जो चाहिए बस वो रखो. मान लो कि यू नीड ओनली लास्ट नेम, राइट? Your question is where? ठीक है. Select में, right? You want only get the एक बार last शेयर name. करेंगे लास्ट, अभी जो शेयर Okay. किया. Okay, 1 second. या आप कहाँ बोल रहे हो? Where you? सर नेक्स्ट तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम लिखा, फिर हम कंपैरिजन कर में लास्ट नेम इक्वल टू हिमूरो. अब हम यदि सैलरी में जा रहे हैं तो आपने लास्ट नेम के बाद फिर सैलरी आगे ऐड किया है, तो हम सेलेक्ट सैलरी नहीं कर सकते? नहीं, मैं चलो, समझा नहीं. वही कर सकते हैं. यहाँ बस select- सैलरी बोल रहा हूँ. हाँ देखो, Select- सबसे आप आगे जाओ सर. जैसे नेक्स्ट डिपार्टमेंट आईडी के बाद फिर सैलरी गया, फिर सैलरी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट के बाद सिर्फ सैलरी नहीं लिख सकते क्या? हाँ, लिख सकते हैं. मतलब यू डोंट वांट आईडी, यू डोंट वांट फर्स्ट नेम लास्ट, मतलब आपको ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, राइट? हाँ आपको हाँ, आईडी मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, राइट? यू डोंट वांट दिस रिकॉर्ड, यू वांट ओनली सैलरी, राइट? तो ये यहाँ बोल तो रहे, राइट? जो भी चाहे लिख Yes. सकते हैं ना. हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर Employee सैलरी इज मोर देन salary 10,000. कर सकते हैं. ठीक तो है. यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, वॉट एवर कॉलम आपको इंटरेस्टेड है, यू कैन पुट है. दैट कॉलम. That's right. ठीक है, ठीक है. ठीक. आपको जो इंटरेस्ट है. Okay, so now let's practice this comparison operator. Okay, so again, Rashekar, please. Okay, so can you run? Okay, can you run the select a star statement without condition? So let us see all the records. Okay, so right now we have this much records, right? Only 4 records. Okay, so now if I do select a star from table, okay, you can see here it is pulling all the record. ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है. इट इज विदाउट कंडीशन, मतलब ये सब कुछ पुल करेगा, राइट? नाउ आई वांट ओनली पर्टिकुलर रिकॉर्ड. फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन किया है, कैन यू क्रिएट वन अनदर क्वेरी टैब? एक अनदर टैब बना लेते हैं, क्वेरी टैब, so that you can practice it. So now I want, can you go to previous tab? So here I want only those employee, okay, who belong to a state UP. ठीक है, और इनका एज 20 से ज्यादा है, ये कंडीशन है. ठीक है, सो कैन यू राइट अ कमेंट देयर इन द न्यू टैब? पुल, नहीं, न्यू टैब में जाओ ना, गो टू न्यू टैब. So this is the question, okay? Pull record for those employees who belongs to a state UP. So आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इंटरव्यू में, okay? And age is more than 20, 18, more than 20, ठीक है, 20 कर 20.
तो यहाँ पर आई वांट दोज रिकॉर्ड्स जिनका वैसे एम्प्लॉय जो स्टेट यूपी से बिलोंग करते हैं एंड जिनका एज इज मोर देन 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, वेयर, तो यहाँ पर वी हैव टू बिल्ड द कंडीशन। ठीक है, तो वेयर स्टेट, अच्छा एंड हम लोग पढ़ाए नहीं है, अगर डोंट यूज एंड राइट नाउ, जस्ट ओनली यूज स्टेट यूपी करते हैं। ठीक है, एंड आई विल टॉक अबाउट लेटर। सो दिस इज द कंडीशन कि आई वांट द रिकॉर्ड फॉर दोज एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू स्टेट यूपी, जो स्टेट यूपी से बिलोंग करते हैं, आई वांट दोज एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हियर आई एम यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। यू कैन सी हियर इट इज पुलिंग ओनली 2 रिकॉर्ड्स, जितने यूपी से हैं ओनली आई एम गेटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। मान लो यहाँ स्टार कर रहा हूँ, आई डोंट वांट ऑल द रिकॉर्ड, आई वांट ओनली मान लो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो हियर पुट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही है। हाँ, जो आप डालोगे वैसे आपको वही मिलेगा। You get only 3 records। और स्टेट भी डाल दीजिए, स्टेट लास्ट नेम के बाद पुट स्टेट एज वेल। You can see here. So these are the people who belongs to state UP. Clear? Yes, sir. Okay. Now I want. Can you show me this all the records again? So here I want to pull only those record. सबका salary same है, right? 20,000 है. Okay. So you can see here there are 2 employee whose last name is Kumar. तो अगर इक्वल तो हम लोग देख चुके हैं, राइट? हाँ, एज, ठीक है, आई वांट टू गेट ओनली दोज एम्प्लॉय जिनका एज 20 से ज्यादा है, मोर देन 20। सो कैन यू क्रिएट अ सिक्वल, आई वांट ओनली दोज एम्प्लॉय हुज एज इज मोर देन 20, मोर देन, तो यहाँ पर मोर देन यूज होगा, राइट? बस मोर देन लिख देंगे। सिलेक्ट, ठीक है। आई थिंक कोट इज मिसिंग, प्रीवियस में यूपी के बाद एक कोट मिसिंग है, स्ट्रिंग है ना? हाँ, सो एज इज मोर देन 20, नहीं 20 विल बी इन नंबर, स्ट्रिंग नहीं है। एज का व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एज, एज आपका नंबर है, राइट? कॉलम इंट है, राइट? तो वहां पर 20 होगा। यस, ओके, या सो दीज आर द पीपल हुज एज इज मोर देन 20। एक काम को एज भी डाल लीजिए, सेलेक्ट में पुट एज एज वेल, आफ्टर स्टेट पुट एज, ताकि एज दिख जाएगा कि व्हाट इज द एज। या ओके, सो दीज आर द पीपल हुज एज इज इक्वल, अच्छा आपने इक्वल रखा, राइट? सो जो 20 है या 20 से ज्यादा है इक्वल तो 20 भी मिलेगा, अगर मोर देन इक्वल रिमूव कर दो तो ओनली मोर देन 20 मिलेगा। नाउ रन दिस, हाँ, नहीं 20 20 25 20 नहीं 20, मोर देन 20 20, तो जो 20 से ज्यादा है 25 सेम ही रहेगा ना सर, रिकॉर्ड नहीं, 20 अब नहीं आएगा ना, अच्छा 20 नहीं आएगा, 20 से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं है, तो जो 20 से ज्यादा है वो मिलेगा। ओके, आता है तो 20 जो आया था वो भी फिर से आता है। हाँ, या ठीक है, तो लेस देन, मोर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। एनी डाउट हियर? नो सर, ये सिंपल है। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी वैसे ही है सर। हाँ, ओके, नाउ यू कैन स्टॉप योर शेयरिंग। ओके, okay, so we learn about all the comparison operator, how to compare data. Okay, so this much we learned, equal, not equal. Okay, so this is the first operator, right? We learned about the comparison operator. Okay, this much is clear, everyone? Yes, sir, yes. Comparison. Okay, next है and operator. ठीक है, and और very simple है, इसमें let's suppose we have multiple condition। अभी तक क्या था कि we are just creating one condition कि state UP है, age more than 20, something like that। Okay, here we are combined the multiple condition using and operator। ठीक है, so and operator is just like a logical operator that combine two Boolean expression in the where clause of the select, and operator display the record if all the condition। and का मतलब क्या होता है, you know the and truth value, मतलब दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए।
ठीक है, Yes, sir. तब वो ट्रू होगा, ठीक है। तो हियर आई कैन क्रिएट मल्टीपल कंडीशन वेयर सेलेक्ट दिस from this table from condition 1 and condition 2 and condition 3, it can go on, okay, you can create multiple and 3 4 5, there's no limit, okay। so ये तभी मिलेगा जब all conditions should be true, and का मतलब होता है कि and true कब होता है, जब all condition true हो तब। अगर एक भी फेल हो गया, एक भी कंडीशन फेल है, तो ये पूरा फेल हो जाएगा। you know the false, right, truth value false value, you know that, right। so in case of and all conditions should be true, तब आपको रिकॉर्ड मिलेगा। अगर पूरा सेटिस्फाई करेगा then you will get the all the record, okay। this is the and। similarly और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। छतों पे चढ़ जाना। okay, I hope you know and or right। so this is the and, this is the or operator, okay। and not operator क्या करता है कि जो भी कंडीशन उसका नेगेशन, अपोजिट, ओके। कंडीशन नहीं रहता है उसमें। हाँ, जो भी कंडीशन आप लगा रहे हो उसका नॉट कर दो, नेगेशन कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर आई वांट टू सिलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय दिस वेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पर आई एम यूजिंग टू ऑपरेटर्स, जहाँ डिपार्टमेंट आईडी 5 है एंड नॉट सैलरी मोर देन 5000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका सैलरी 5000 से ज्यादा नहीं है, नॉट लगा रहा हूं। अगर नॉट नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 5 एंड सैलरी इज मोर देन 5000। अगर नॉट लगा दियो तो नॉट इज जस्ट नेगेशन, उसको अपोजिट करना है, तो जिसका सैलरी 5000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस मच लेट्स प्रैक्टिस दिस, ओके, एंड और ओके। सो आई एम स्टॉपिंग माय शेयर, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Sir, hello. Yes. Yeah, in that case, we can use this AND operator in this question only. Yes. So here, for example, the first question, right? So here I want to pull the record who belongs to state UP and age is more than 20. So here you have to use AND operator, okay? So where state is equal to UP and age is more than 20. So here combining two condition. Okay. Also put age, huh? So we have just one record, such record. जो स्टेट यूपी से हैं जिनका एज 20 से ज्यादा है, so just one record we have, right? हाँ, so can you run the, हाँ, अच्छा ठीक, और लगा रहे हो तो दोनों में से एक ट्रू होगा। अगर स्टेट यूपी वो भी मिलेगा, देखो यहाँ पर स्टेट यूपी का भी मिल रहा है, ठीक है, और जो एज 20 से ज्यादा है, देखो टीएन का, देखो स्टेट टीएन का मिल रहा है बिकॉज एज 20 से ज्यादा है, राइट, दैट्स व्हाई वेटिंग दिस रिकॉर्ड, नंबर 2 record। Yeah, we are using or, right? So either a state should be UP or age should be 20, more than 20. So that's why you're getting multiple record. आपका TN का भी मिल रहा है, आपका MS का भी मिल रहा है, because इन दोनों के लिए age is more than 20. कंडीशन। हाँ, और के केस में सर कोई भी एक कंडीशन सही हो हाँ, जाएगा तो मिल and जाएगा। है। Yes. यस सर। Okay. अगर and लगा देंगे तो दोनों मिलना चाहिए, the UPC भी होना चाहिए और उसका age भी exactly 20 से बड़ा होना चाहिए। सर एंड एक ऐसा लगाइए जिसमें कंडीशन फेल कर जाए। Not one लगेगा, and लगाना पड़ेगा, and हाँ लिखो and not, just type not, okay। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, I want those people whose state is UP and age is not more than 20, the 20 से ज्यादा नहीं है, मतलब 20 से कम है, एक ही आएगा फिर। एक ही आएगा, राइट। यहाँ पे एज और कम करेंगे तो विल नॉट गेट द रिजल्ट। हाँ, 18 करिए। कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन Right. सेटिस्फाई। हाँ, हाँ, ठीक है। So this way we can use and or. यस सर। So you can play with, okay, this okay, let me put some different condition. Can you show me the stars, all the record? Okay, so यहाँ से okay, for example, city है बैंगलोर, एज है, ईमेल एड्रेस है, that's all right, पैन है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो यहाँ पर जिसका डेट ऑफ बर्थ
1975 से ज्यादा है, ओके, आई वांट ओनली दोज रिकॉर्ड जिनका डेट ऑफ बर्थ इज मोर देन, जो 1974 के बाद जिनका जन्म हुआ है, आई वांट दोज रिकॉर्ड हु हैज born after 1974. Date of birth is more than the date of birth क्या है? It's a date, right? So it should be in the quote. Date हमेशा quote में होता है. हाँ. So put inside the quote. हाँ. Yes. Okay. Now run this. Date of birth. Just put the date of birth also in the select. Select में put the date of birth also so that I can see. And the column name, same column name. Okay, so you can see 1974 say more than, right? 75, 89. तो यहाँ पर month भी consider कर रहा है, right? It is considered the month as well. Month and year. Yes, 1975 से ज़्यादा, like this. Okay, so this way you can create a condition. Okay, and or not, more than, less than, equal, or you can combine multiple statements. Okay, let me create 3 statements. Can you show me the all data? So data ज़्यादा है नहीं ना, project है. डेटा ऐड कर दीजिए सर. Okay, so I want the record who belongs to department project, okay, and who is from Bangalore and whose age is so I want those people whose department is project and who belongs to state Bangalore and whose age is more than 20. So यहाँ पर and करना पड़ेगा, right? So department is project and age is more than 20 and state स्टेट करना. state is Bangalore, right? State. Yes. What are the column name? State, right? State equal. And what is the data there? Bangalore lowercase, right? So we'll make it city, na? City, okay, city. Quote, okay. So ये तीनों satisfy हुआ तभी मिलेगा. You will get the record. So there's no such project record. in select also. I think that is missing. Yeah, but there's no such record because there's nothing is coming. So projects project में 2 project लड़के है हैं, they are and Bangalore में Bangalore एक है, थोड़ा but उसका age 20, right? yeah, we इसलिए have नहीं मिल रहा है. given Given more than than, 20. अगर equal कर दो तो मिल जाएगा. Just put equal there. हाँ, now you will find one record. हाँ, एक record आ गया, right? Can see? Yes, sir. Okay. So this is the, तो ये पूरा practice करना पड़ेगा. Okay, so this much you have to practice.